आफ्टर 15 days of approximate ovulation, we can do the pregnancy test. आप घर पे ही कर सकते हो. Hi everyone, I am Dr. Vaishali Sharma, consultant gynecologist, laparoscopic surgeon and infertility specialist. आज हम बात करेंगे ovulation induction and timed intercourse. What is ovulation induction and how is it done? इसमें आपको क्या क्या मेडिसिन दी जाती हैं, कितने टाइम आपको क्लिनिक विजिट करना पड़ता है, एंड व्हाट आर इट्स साइड इफ़ेक्ट्स, व्हाट आर इट्स इफ़ेक्ट्स, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग टुडे. ओवुलेशन इंडक्शन का मीनिंग है कि हम कुछ ऐसी मेडिसिन आपको देते हैं विच इंड्यूसेस ओवुलेशन. दैट मीन्स जो एग्स आपकी ओवरीज में प्रेजेंट हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, जो टैबलेट्स हो सकती हैं या इंजेक्शंस हो सकते हैं, एंड it leads to formation of multiple eggs, maybe 1 or 2 or sometimes 3 and more than that also, and these eggs then become available for fertilization. जैसे हम जानते हैं हर महीना एक एग बनता है हर ओवरी में either of the sides and which is available for fertilization. In ovulation induction, we usually do it for PCOD patients or PCOS patients where there is no ovulation. मतलब ओवरी में एग्स तो हैं बट वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो रिलीज नहीं हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन के लिए. ऐसी कंडीशंस में जो मेडिसिन दी जाती हैं वो हेल्प करती हैं उन एग्स को ग्रो करने में और बाद में रिलीज होने में, जिससे कि वो अवेलेबल होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, एंड सो दैट एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड एंड इट कैन गेट इम्प्लांटेशन एंड देन द प्रेगनेंसी रिजल्ट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. सो दिस वे ओवुलेशन इंडक्शन इज डन. What are the medicines which are available and what kind of injections are there? देखिए, इसमें कुछ मेडिसिन्स हैं जो टैबलेट फॉर्म में आपको दी जाती हैं. यूजुअली इन्हें स्टार्ट किया जाता है पीरियड के सेकेंड डे से, एंड आपको इन्हें 5 दिन तक यूजुअली लगातार लेना होता है. आपको 1 टैबलेट वंस अ डे, मे बी फॉर 5 days यू हैव टू टेक इट. देन हम आपको बुलाते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए इन द क्लिनिक. वी डू द TVS, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड. इन दिस वी सी कि ओवरीज में कितने एग्स ग्रो कर रहे हैं. ये अल्ट्रासाउंड हमें स्टार्ट करना होता है यूजुअली 7th, 8th, 9th डे. हम कभी भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्सनस स्पेसिफिक साइकिल ड्यूरेशन. यूजुअली हम 9th डे से अल्ट्रासाउंड स्टार्ट करते हैं, कभी कभी हमें 7th डे भी स्टार्ट करना पड़ता है, कभी कभी वी ऑलवेज टेल देम कि ओके यू कैन कम अ बिट लेट बिकॉज योर साइकिल्स आर अ बिट लॉन्गर. सो वी डू ऑल्टरनेट अल्ट्रासाउंड्स. हम हो सकता है आपको 2 दिन के अंतराल पे बुलाएं या कभी कभी 1 दिन के अंतराल पे भी बुलाना पड़ता है, ये देखने के लिए कि एग्स कैसे ग्रो कर रहे हैं. नॉर्मल एग्स के ग्रो करने का साइज वेरी करता है 1 mm to 2 mm पर डे, एंड हम चाहते हैं कि एग जो मैच्योर हो उसका साइज अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट 18 मिलीमीटर्स या 20 मिलीमीटर्स तक पहुंच जाए. जिस दिन हमें अल्ट्रासाउंड में दिखता है कि अब एग 18 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर हो चुका है, दैट मीन्स नाउ दैट एग इज मेच्योर इनफ टू गेट रिलीज्ड. उसको रिलीज करने के लिए हम आपको इंजेक्शंस एडवाइस करते हैं. आपको ये इंजेक्शन यूजुअली या तो मसल में लेना होता है, बैक पे ले सकते हैं, शोल्डर पर ले सकते हैं. समटाइम्स सम ब्रांड्स आर देयर विच यू हैव टू टेक सबक्यूटेनियसली, तो उन्हें आपको अपनी टमी में लेना होता है. एंड दीज इंजेक्शंस आर यूजुअली टाइम्ड which ensures that the egg will be released approximately 36 hours after those injections. So अगर आपने यह इंजेक्शन आज सुबह लिया, आप क्लिनिक आए, आपने सुबह 10 बजे अप्रॉक्सीमेटली ये रिलीज का इंजेक्शन लिया है, इन दैट सिनेरियो जो एग अवेलेबल होगा इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 36 hours. सो दैट मीन्स आज सुबह इंजेक्शन लेने के बाद कल रात को 10 बजे इट विल बी released on an average, and therefore we always advise you to stay together maybe a day after that injection and try naturally for at least the next 3 to 5 days. There is no need to try daily. Even alternate day staying together is good enough, and you can try for next 3 to 5 days, maybe 6, 7, 8 days maybe. But उसके बाद अगर आप साथ में रहते हैं और ये पीरियड आपने अगर मिस कर दिया है, then the chances of pregnancy are hardly. So that is the most important part. We through this follicular monitoring we get to know कि कब वो egg release हो रहा है and कब it is available. So we always tell you कि these are the most fertile days. You try in those days, and after that we just give you the medicines which help in fertilization and implantation. After 15 days of approximate ovulation,
वी कैन डू द प्रेगनेंसी टेस्ट. आप घर पे ही कर सकते हो. आप मॉर्निंग में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हो किट के थ्रू, और यू कैन गेट अ ब्लड टेस्ट ऑल्सो डन, and it gives us a positive result if it is pregnancy is there. So ovulation induction is a very simple procedure, and it is usually used in PCOD and PCOS cases. It can also be used in unexplained infertility, and in cases where the medicines are not working for ovulation, we have many other options also. There are some injections जो हम डेली देते हैं, कभी कभी 5 दिन देते हैं, कभी कभी 7 days तक देना पड़ता है. In that scenario, those injections are also which help us in making good number of eggs. That thing is called as super ovulation. Super ovulation का मतलब हुआ कि normally एक egg बनता है एक ovary में. By ovulation induction also we are trying to do the same, कि एक egg बन जाए जो normally नहीं grow कर पा रहा है due to any reason. But in super ovulation we are trying to make at least 2 or 3 eggs. That way what happens कि एक egg जो बनता है उसकी probability whatever it is there for pregnancy, if there are more number of eggs like 2 or 3, the chances will definitely be more. But again there is some risk of having a multiple gestation. You can have twins and rarely triplets also. So these injections are used only when we have used other methods, lesser invasive methods, and we are not getting any response by those methods. So injections also are used in ovulation induction, and we have to use them very carefully, because ovulation induction done by using injections can lead to ovarian hyperstimulation syndrome, that is called OHSS. It is a very I would say deadly kind of a condition. It's actually it is there. अगर mild OHSS है, nothing to worry, but we have to be very careful when we are doing it. So when we are giving you injections, we are calling you again, we are looking at your hormones, and we are titrating the doses of those hormones so that to ensure that there is no hyperstimulation. In such a scenario, the success rate of having a pregnancy definitely increases a lot, and there may not be need to go for any further treatment or procedure if this ovulation induction or super ovulation is done nicely. So I have tried to answer all the queries which we usually get on daily basis, and I would be delighted to help you out. So if you have any further queries, you can leave in the comment section. Thanks a lot. Stay healthy. Take care. Bye.